Hello children, I am Poonam Bagga welcoming you again in your maths class. We are studying class 8th maths, chapter 11 mensuration. We learnt the formula to find the surface area of a cube, cuboid and cylinder. We learnt the formula to find the lateral surface area as well as the total surface area for each of these shapes. Now today we are going to start exercise 11.3 and in this video we will take up the first 5 questions again based on these different formulae. We start with the first question. Be ready. I hope you have started this exercise once on your own and you have done many of the questions and now you are just simply checking your answers from here. The first question is, there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? आप देख सकते हैं दो boxes यहाँ पर दिखाए गए हैं और इनको बनाने में किस में कम मटेरियल चाहिए होगा ये पूछा है. अब जब भी एक बॉक्स बनाना होगा तो कैसे बनेगा? उसके ये फेसेस बनाने होंगे, ये फेस बनेंगे, फिर उनको आप कंबाइन करेंगे तभी तो बॉक्स बनेगा. तो एक्चुअली जब हम इसका फेसेस की बात कर रहे हैं तो हम इसका सरफेस की बात कर रहे हैं. जो फेसेस हैं वो मिलाकर इस बॉक्स का सरफेस बना रहे हैं और जितना बड़ा फेस होगा उतना ही बड़ा मटेरियल चाहिए उसको बनाने के लिए. तो यहाँ कनेक्शन है एरिया और फेसेस और उस मटेरियल के बीच में जिसको हमें यहाँ यूज़ करना है इन बॉक्सेस को बनाने में. सो हियर वी विल बी एक्चुअली फाइंडिंग आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज बॉक्सेस. क्योंकि सब तरफ से बनाना है, हॉलो तो है नहीं, ऊपर टॉप भी बनेगा, नीचे बॉटम भी बनेगा, 4 वॉल्स भी बनेंगी. तो क्योंकि यहाँ पर सभी फेसेस बनेंगे उस मटेरियल से तो हमें इस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा. दोनों ही बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर हम देखते हैं कि किसका टोटल सरफेस एरिया कम आ रहा है. जिसका एरिया कम होगा उसको बनाने के लिए कम मटेरियल चाहिए होगा. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. सो हियर एज वी हैव बीन आस्क्ड व्हिच बॉक्स रिक्वायर्स lesser amount of material to make. For this we will be finding the total surface area of each of these boxes and we will see which one has the less surface area. We start the solution. We will first take the first shape which is cuboidal here, cuboid box, and we will find its total surface area. We take here the length of the cuboidal box. It is given as 60 centimeter. We denote it by small l, 60 centimeter. The breadth we denote it by small b. It is 40 centimeter. And the height of the cuboidal box, it is 50 centimeter. We denote it by small h, 50 centimeter. Now, total surface area of cuboidal box. Yes, come up with the formula now. The formula will be used. It is given by 2 into LB plus BH plus HL. Multiply here 2 into LB. L is 60 into B. It is 40. So 60 into 40 plus BH 40 into 50 plus HL 50 into 60. बस यहाँ पर values रखनी है. And now this now will be equal to 2 into 6 4s are 24 and double zeros plus here we have 4 5s are 20 double zeros and 6 5s are 30 and double zeros. Simply we need to add up these numbers and multiply by 2. It's simple and easy. 2 into add up. We have 2 zeros at the back, 4, then here 4 and 2 2 4 and 3 7. Now multiply this. You will get 2 4s are 8 and 2 7s are 14 and double zero. It's 14,800. And now what will be the unit of surface area? It will be centimeter square. देखिए आप sides जो हैं centimeter में दी हैं. So the area will be in centimeter square. This is the total surface area of the cuboidal box. Now we will find the total surface area of the second box and here you will see all the lengths are equal. Length, breadth, height तीनों ही equal हैं और ऐसे में ये एक cubical box है. We can write here the second cuboidal box is a cube of side 50 centimeters again. It is a cube of side 50 centimeters. So the total surface area, now we have to use the formula of a cube. Total surface area
we can now call this box as cubical box. Total surface area of cubical box, here we will use the formula, come up with it. It will be 6 into side square. 6 into side square. Now this will be 6 into the side is 50. So 50 square. Getting it? हमारा फॉर्मूला हमने लर्न किया था 6 इंटू एल स्क्वायर. एल क्या है? एल इज़ द साइड ऑफ द क्यूब. तो यहाँ पर एल जो है हम उसको नोटेशन फॉर्म में नहीं ला रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड साइड. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड हियर. एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 50 इंटू 50. 50 square is 50 into 50. This will be 6 into 2500. Multiply, we have 2 zeros, 6 5 is 30, and here we will have 15, and so it will be 15,000 centimeter square. अब आप देखिए, ये है क्यूबिकल बॉक्स जिसका टोटल सरफेस एरिया आ रहा है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यूबॉइडल बॉक्स का सरफेस एरिया आया था 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब बताइए कि किसका सरफेस एरिया कम है? ऑब्वियसली द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइडल बॉक्स इज लेसर देन द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबिकल बॉक्स. और ऐसे में किसको बनाने के लिए कम मटेरियल चाहिए होगा? Obviously, to make this cuboidal box, lesser material will be required. Now we write the answer here. We see that the total surface area of cuboidal box is less than the total surface area of cubical box. हमने देखा कि cuboidal box का total surface area कम है cubical box के total surface area के. Hence, the cuboidal box requires lesser amount of material to make. किसको बनाने में कम मटेरियल लगेगा? Obviously, जिसका सरफेस एरिया कम है उसके लिए कम मटेरियल चाहिए, और हम देख रहे हैं क्यूबॉइडल बॉक्स का सरफेस एरिया कम है क्यूबिकल बॉक्स से, इसलिए क्यूबॉइडल बॉक्स को बनाने के लिए लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड है. This is according to the question. We have finished it. It was easy. I hope the question is clear. Next we take question number 2. A suitcase with measures 80 centimeter by 48 centimeter by 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? यहाँ बात हो रही है एक टारपोलिन क्लॉथ की. मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बड़ा सारा टारपोलिन क्लॉथ है और इसकी हमें विड्थ दी गई है 96 सेंटीमीटर. देखिए ये विड्थ है 96 सेंटीमीटर, और हमसे इसकी लेंथ पूछिए कि कितना लंबा कपड़ा चाहिए. किस काम के लिए? इस कपड़े में से हमें सूट केसेस के कवर स्टिच अप करने हैं. यू कैन सी अ सूट केस विद मेजर्स, दीज मेजर्स, इट इज़ टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन क्लॉथ. इसके कवर बनाने हैं. और ऐसे में अब आप देखिए, अगर मान लीजिए दिस इज़ वन ऑफ द सूट केसेस, सपोज आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट, सपोज दिस इज़ वन ऑफ द सूट केसेस, तो इसका कवर बनाना है फ्रॉम दिस टारपोलिन क्लॉथ. और ऐसा एक सूट केस नहीं है, देयर आर 100 सच सूट केसेस. तो 100 सूट केसेस के लिए कितना बड़ा ये कपड़ा चाहिए, कितना लंबा कपड़ा चाहिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन है. तो अब आप बताइए क्या करना चाहिए. क्योंकि यहाँ पर सूटकेस के सभी फेसेस को कवर किया जा रहा है, तो फेस क्या हुआ? आउटर कवरिंग हुई सूटकेस की. और ऐसे केस में जब भी आउटर कवरिंग की बात हो वहाँ पर हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं. आने वाले समय में आप पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. वॉल्यूम तो डिनोट करता है इनर स्पेस को, और सरफेस एरिया डिनोट करता है आउटर कवरिंग को, आउटर फेसेस को. तो क्योंकि अभी सूटकेस का आउटर कवर बनाना है, तो यहाँ पर हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे फॉर वन सिंगल सूटकेस. वन सूटकेस का हम पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि देयर आर 100 सच सूटकेसेस. और फिर जो टोटल आएगा कपड़े का, या कह लीजिए कवर का एरिया, उतना ही तो कपड़ा चाहिए हमें. जितना आपका एरिया आएगा इन सभी कवर्स के लिए, उतना ही बड़ा तो हमें कपड़ा चाहिए होगा वो कवर सिलने के लिए. और उसका एरिया जो आएगा सभी 100 सूटकेसेस के कवर का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा टू द एरिया ऑफ दिस टारपोलिन क्लॉथ. और जब हम वो एरियाज इक्वेट करेंगे उससे हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी. सो आई होप द बेस लाइन ऑफ द क्वेश्चन इज
clear. Now we will be writing the solution. Let me erase it. We start from here itself. Let me erase this one also. Yes, we start from here. First of all, we write the length, breadth and height of each suitcase. Length of the suitcase, it is denoted by small l, and the first number indicates the length. So, it will be equal to 80 centimeters. Then we write the breadth of the suitcase. It will be denoted by small b, and it is equal to 48 centimeter. So, 48 centimeter. Then we write the height of the suitcase. It is denoted by small h, and here we see it is 24 centimeter. Now, here we need to find the total surface area of each suitcase because it is to be covered by tarpaulin cloth. हर suitcase को cover up करना है तो उसका total surface area find out करेंगे. We take it on next page. Total surface area of a suitcase, it will be given by 2 into, since this is cuboid shape, so we will be using the formula to find the total surface area of a cuboid. यहाँ पर cuboid name mentioned नहीं है, यहाँ किसी भी जगह पर question में cuboid word mentioned नहीं है. आपको अपने आप समझ लगानी होगी कि सूटकेस की शेप कैसी होती है. सूटकेस इज क्यूबॉइडल इन शेप, उसकी शेप क्यूबॉइड होती है. तो ऐसे में जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो एक क्यूबॉइड के केस में होता है. सो हियर वी विल राइट द फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. नाउ प्लेस इन द वैल्यूज. 2 इंटू एल बी, इट विल बी 80 इंटू 48. सो 80 into 48 plus BH 48 into 24, 48 into 24 plus then we have H into L 24 into 80, 24 into 80. बस अब सिंपल है, कैलकुलेशन करना है. 2 into here we will have 8 8s are 64, 6 carried 38 and then 1 0. Plus here on multiplying these two numbers you will get 1152, plus here on multiplying these two numbers 0 here, 4 8s are 32, 3 carried and 19. So 1920. This will be 2 into, add up these three numbers 0, 2 and 0. So 2 will be there, then 4, 5 and 2. 4 and 5 9, 10, 11, 1 carried. Here we will have 9, 10 and 19, again 1 carried. 4, 5, 6, 6, 9, 1, 2. This will be the sum of these numbers. Multiply by 2. 2 2s are 4, 2 1s are 2. Then 2 9s are 18, 1 carried, 2 6 are 12 and then 13. 13,824. And what will be the unit? The measurements are in centimeter, so the unit will be centimeter square. Okay. Now what next? There are how many suitcases? There are 100 such suitcases. For this we will find the total surface area of 100 suitcases. ये तो अभी surface area आया है एक single suitcase का और हमें cover बनाना है 100 suitcases का. So here we now find the total surface area of 100 such suitcases. This will be this area 13824 centimeter square into 100. 100 से multiply कर देंगे. So this will now be 1382400 centimeter square. So it will be 13,82,400 centimeter square. This much is the area of the cover to be stitched for 100 suitcases. This is the area of the 100 suitcases, the total surface area, and this also denotes the area of the tarpaulin cloth which is required to stitch the cover of these 100 suitcases. In 100 suitcases का ये total surface area है और जितना ये area है उतना ही तो हमें tarpaulin cloth चाहिए जिससे हम इन suitcases का cover seal पाएँ.
तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, द एरिया ऑफ द टारपोलिन क्लॉथ इट विल बी इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सच सूट केसेस. जो कपड़ा है, जस्ट गो थ्रू द फिगर, आई रिमूव्ड इट. ओके, लेट मी वंस अगेन टेक इट. जो हमारे पास कपड़ा आया है, मान लीजिए ये है टारपोलिन क्लॉथ जिसकी हमें पता है विड्थ है 96 सेंटीमीटर और लेंथ हमें बतानी है. ये जो कपड़ा है उसका एरिया इक्वल होगा टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूट केसेस. जितना कपड़ा हमें 100 सूट केसेस का कवर बनाने के लिए चाहिए वो इक्वल होगा इन 100 सूट केसेस के टोटल सरफेस एरिया के. जितना ये एरिया आ रहा है उतना ही तो कपड़ा चाहिए. तो ये दोनों इक्वल करने पर हमें ये लेंथ मिल जाएगी जो कि अननोन है फॉर दिस टारपोलिन क्लॉथ. हियर नाउ area of tarpaulin cloth, this is equal to total surface area of 100 suit cases. Getting it? Total area of tarpaulin cloth it will be equal to total surface area of 100 suit cases. और ये कितना है, ये है आपका, देखिए 1382400 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर. और टारपोलिन क्लॉथ का एरिया कैसे मिलेगा, इट विल बी लेंथ इनटू breadth of cloth, यही तो होगा इसका एरिया. Now we know the breadth of cloth, it is given by 96 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन में ही दिया है. This will be equal to 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ से अब लेंथ ऑफ क्लॉथ निकालना इजी है. Simply take this 96 सेंटीमीटर to the RHS, it will go in division. So we write here length of cloth, it will be now equal to 1382400 upon 96. We can divide both these numbers by 12. We can see 12 8s are and here 12 1s are, then 18 again 12 1 times and 62 5s are 60, 2 4 2s are 24 and 00. So we can cancel these numbers by 12. So in place of cutting it in this way, let me write it here as upon 96, this will be equal to this much upon 8. Now we can divide by 8. Yes, 8 1s are 8, then 35, 4s are 32, again 32 4 times and 00. So it will be 14400 सेंटीमीटर्स. लेंथ है ये, तो ये सेंटीमीटर में आएगी, एरिया नहीं है तो सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगाइएगा. हियर वी विल बी हैविंग ओनली सेंटीमीटर. देखिए आप, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊपर यूनिट तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ऊपर की यूनिट, ये ऊपर की यूनिट और नीचे यूनिट है हमारी सेंटीमीटर. यहाँ 96 सेंटीमीटर से हियर वी विल बी जस्ट रिमूविंग दिस स्क्वायर. ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ ऊपर टॉप में, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर यूनिट है, कैंसिल कर दीजिए तो सेंटीमीटर ही तो बचेगी यूनिट लेंथ के केस में. इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ द क्वेश्चन आस्क्स अस हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड. तो लेंथ जो पूछी है वो मीटर्स में पूछी है और हमारा जो आंसर आ रहा है वो सेंटीमीटर में. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. बाय डिवाइडिंग बाय 100 वी गेट इट एज 144 मीटर्स. सो वी राइट नाउ द लेंथ. व्हाट शुड बी द लेंथ नाउ? द लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ शुड बी 144 मीटर्स. इतना बड़ा कपड़ा होगा तभी 100 सूट केसेस के कवर सिल पाएंगे. गेटिंग इट? नाउ वी राइट द फाइनल आंसर. हेंस the length of the tarpaulin cloth should be 144 meters. This is the answer. Next we take here question 3. Find the side of a cube whose surface area is 600 centimeter square. यहाँ पर एक क्यूब की बात हो रही है और उसका सरफेस एरिया दिया गया है. जब भी लैटरल या टोटल सरफेस एरिया ये मेंशन्ड ना हो
तो हम उसे टोटल सरफेस एरिया ही लेकर चलेंगे. सो दिस मीन्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इट इज़ गिवन एज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. And here we have to find the side of the cube. For this we will be using the formula of total surface area of a cube. वो formula use करेंगे और फिर ये values को आप use करेंगे और देखते हैं कैसे हमें side मिलती है cube की. ठीक है. So here we write given surface area of cube, it is equal to 600 centimeter square. Okay, we know, now we know the formula. We know surface area of a cube, it is given by 6 into side square. ये फॉर्मूला होता है. अब यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल रहा है, यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है, तो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही क्या डिनोट कर रहे हैं, surface area of cube. So this implies that 6 into side square, this is equal to 600. और यहाँ से आप 6 को ले जाइए RHS में, side square will be 600 upon 6. This implies side square it is equal to 100. और अब side कैसे मिलेगी? We know we will be finding the side by taking the square root. तो दोनों तरफ square root लेने से side की value हो जाएगी आपकी square root of 100 and the square root of 100 is 10 and the unit will be centimeter. So 10 centimeter. अब क्योंकि side है तो square मत लगाइएगा unit में. We are finding the side and so the side of the cube is 10 centimeters. We write here. Hence the side of the cube is 10 सेंटीमीटर. तो देखिए कितना इजी रहा. यहाँ क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया दिया गया था क्यूब का, तो उसका फॉर्मूला लेकर चलते हैं, फिर उनको इक्वेट कर लीजिए और फिर अपने आप ही जो अननोन वैल्यू है आपको अपने आप रास्ता समझ में आता जाएगा कि क्या करना है आगे, और अपने आप ही आप देखेंगे कि अननोन वैल्यू आपको मिल जाएगी. देखिए साइड मिल गई आपको 10 सेंटीमीटर. तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एंड इट इज़ यूज्ड एंड आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, सो अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. Next we take question 4. Rukhsar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter by 2 meter by 1.5 meter. देखिए ये एक कैबिनेट है और रुखसार इसको पेंट कर रही है outside of this cabinet. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? कैबिनेट का बॉटम जो है सिर्फ उसी को पेंट नहीं किया जा रहा है, बाकी सभी फेसेस को पेंट कर रहे हैं. दिस मीन्स all the 4 side faces they are painted and the top of the cabinet is also being painted. ठीक है, and the bottom is left now. So we have to find the area. कितना एरिया पेंट किया जा रहा है ये क्वेश्चन है. तो यहाँ हमें एरिया फाइंड आउट करना है. चारों साइड फेसेस का एरिया निकालेंगे और जो टॉप फेस है उसका एरिया निकालेंगे, उनको एड अप कर लीजिए. उतना सरफेस एरिया पेंट किया जा रहा है बाय रुखसार. And this is the question. So it's easy. We take the next page and start the solution. We write here length of the cabinet, it is given as 1 meter. So we write here L equal to 1 meter. Then breadth of the cabinet, it is 2 and so we write it by B, 2 meter, and the height is denoted by H, it is given as 1.5 meter. Now the area to be painted, we write here area to be painted, this will be equal to area of 4 side faces. Side faces पर पेंट करना है प्लस एरिया ऑफ टॉप फेस. दिस इज क्लियर. कहाँ कहाँ पेंट हो रहा है देखिए, ऑल फेसेस एक्सेप्ट द बॉटम. बॉटम पर पेंट नहीं हो रहा, बाकी सभी फेसेस पे पेंट किया जा रहा है. सो ऑल द 4 साइड फेसेस वो भी ले रहे हैं और ये टॉप फेस भी ले रहे हैं. सो हियर वी हैव रिटन द एरिया टू बी पेंटेड, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 साइड फेसेस प्लस द एरिया ऑफ द टॉप फेस. एंड नाउ हाउ टू फाइंड दिस एरिया? Area of 4 side faces, this denotes the lateral surface area, and for this here we will be using the formula
फॉर द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, क्योंकि आप देखिए कैबिनेट कौन सी शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है. यहाँ पर क्यूबॉइड वर्ड मेंशन्ड नहीं है क्वेश्चन में, but still you should understand that this shape is a cuboid, and so here we will be applying the formula of the lateral surface area of a cuboid. So here we will write area of four side faces, it will be 2 into L plus B into H, ये formula होता है, and then plus the area of the top face, we get it by taking length into breadth. देखिए आप, ये length और यहाँ से breadth, इनको multiply करने से length into breadth we get the area of the top face. So here we write length into breadth. बस अब values इसमें रख देते हैं. 2 into L plus B, L is 1 and B is 2 into 1.5 plus here we have L into B 1 into 2. Getting it? ये है आपका फर्स्ट पार्ट और ये है आपका सेकेंड पार्ट. यहाँ से भी आप देख लीजिए इस तरह से. With this we will get equal to 2 into 1 plus 2 is 3 into 1.5. This is the first part, plus here we have 1 into 2 equal to 2. This will now be equal to, yes, 2 3s are 6, 6 into 1.5, 15 6 is 90 and then mark the decimal. It will be 9.0 plus 2 or simply 9 plus 2 equal to 11 and the unit will be meter square. So this much area will be painted by Rukhsar, and the question is how much surface area did she cover if she painted all faces except the bottom. Here we write that Rukhsar painted 11 meter square of area. Rukhsar painted an area of 11 meter square. This is implied from all this discussion. Okay, the question was simple and easy. I hope you have already done it. And now we have question 5. Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15, 10 and 7 meters respectively. Daniel किसको paint कर रहे हैं? देखिए आप, the walls and the ceiling. Ceiling को भी और walls को भी. And here we have the cuboidal hall. This is also mentioned. Length, breadth और height हमको दी गई है. From each can of paint, 100 meter square of area is painted. From each can of paint. Can आप समझ सकते हैं कंटेनर. कंटेनर को हम कह रहे हैं यहाँ पे. From each container of paint, can of paint, 100 meter square of area is painted. तो जो आपका कंटेनर है जिसमें पेंट है, एक कंटेनर से आप 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकते हैं. और ऐसे में हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम. ये पूरा रूम जो है इसको पेंट करने के लिए किस किस को पेंट कर रहे हैं? देखिए, वॉल्स और सीलिंग को, इनको पेंट करने के लिए कितनी कैन्स चाहिए होंगी पेंट की? एक कैन जो है पेंट की या एक कंटेनर जो है पेंट का, उससे तो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया ही पेंट होता है. और जितना एरिया इन वॉल्स और सीलिंग का आएगा उनको पेंट करने के लिए कितनी कैन्स रिक्वायर्ड होंगी? दिस इज द क्वेश्चन. तो पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि हमें वॉल्स और सीलिंग का एरिया फाइंड आउट करना चाहिए. सो वी बिगिन द सॉल्यूशन. वी राइट हियर सॉल्यूशन. वी टेक द लेंथ ऑफ द हॉल. It is given by 15 meters, you can see. Let me denote it by L first. L, this is 15 meters. Then breadth of the hall. It will be denoted by small b and it is 10 meters, we can see. And then height of the hall. It will be denoted by small h and it is 7 meters. Now the area to be painted, it is the area of the 4 walls and the ceiling. So again here we take the next page and write area to be painted. This will be equal to area
of 4 walls of the room or of the hall. We have been given the hall. Here you can see it's cuboidal hall. So we write here area of 4 walls of the hall plus area of ceiling. इन्हीं पर तो पेंट करना है, तो हमने इनका एरिया फाइंड आउट करना है और उसको एडअप कर लेना है. दिस मच एरिया विल बी पेंटेड बाय Daniel here, you can see. And so now area of the 4 walls, this will be given by 2 into L plus B into H. The formula is very well learnt by you, I hope. And then area of ceiling, ये कैसे मिलेगा? The area of ceiling is given by length into breadth. Similarly, the area of the floor is also given by length into breadth. So here we will write L into B. This will give you 2 into L. L it is 15 and B is 10. So 15 plus 10 into H, it is 7. So 7 here. Plus L into B. L is 15 and then B is again 10. So 15 into 10. I hope it's clear. This will give you 2 into, here we will have 25 into 7, this much, plus here 150. Now this will be equal to 50 into 7 plus 150. This further will be equal to 350 plus 150. This will be equal to 500 and the unit will be meter square. देखिए सभी लेंस आपकी मीटर में है, so meter square. So this is now the area of the 4 walls and the ceiling of the hall. This much area is to be painted by Daniel. Now the question arises, here we have been given that each container of paint can paint 100 meter square. एक कंटेनर से 100 मीटर स्क्वायर को भी पेंट कर सकते हैं, तो ऐसे में कितनी कैंस चाहिए होंगी? दिस इज द क्वेश्चन. सो हियर वी राइट area that can be painted from 1 can of paint, it is equal to 100 meters square. And now the number of cans that are required, number of cans of paint required, बताइए ये कैसे मिलेगा हमें? This we will get by actually dividing the area of the hall that is to be painted by the area which can be painted by 1 can of paint. जितना area हमको पेंट करना है वो आया है आपका 500 मीटर स्क्वायर, और एक कैन से कितना एरिया पेंट होता है? इट इज़ 100 मीटर स्क्वायर. तो इनको आप डिवाइड कीजिए. एक्चुअली ये जो पेंट है इसको आप पूरे एरिया पे डिवाइड कर रहे हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं. सो हियर वी विल हैव टू डिवाइड एंड दिस विल गिव यू इक्वल टू 5 cans. But here we need to mention that the number of cans of paint required, we will get it by dividing the area to be painted upon area that can be painted by 1 can of paint. एक कैन से जितना एरिया पेंट हो सकता है उससे हम डिवाइड करेंगे द टोटल एरिया दैट इज़ टू बी पेंटेड. After this we will be dividing 500 meter square by 100 meter square and this will give us 5 cans, and so the number of cans required, it will be equal to, hence 5 cans are required to paint here in this case. I hope the question is clear from exercise 11.3. Soon we will meet with the remaining questions in our next video. Thank you for watching and take care of yourself. Bye for now.